हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जाने कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 1. Which part of plant helps to carry food to all parts of plant? Option A root. Option B stem. Option C leaf. Option D flower. The correct answer is option B stem. Question number 2. Plants take carbon dioxide from the air through tiny openings found on the Option A fruits. Option B leaves. Option C roots. Option D stems. The correct answer is option B leaves. Question number 3. Male reproductive part of a flower is Option A sepals. Option B pistil. Option C stamen. Option D petals. The correct answer is option C stamen. Question number 4. Which plant has reticulate venation in its leaves? Option A wheat. Option B sugar cane. Option C bamboo. Option D marigold. The correct answer is option D marigold. Question number 5. Which modified part of a plant sweet potato is? Option A stem. Option B root. Option C leaf. Option D fruit. The correct answer is option B root. Question number 6. Cactus plants store water in their Option A spines. Option B roots. Option C stem. Option D leaves. The correct answer is option C stem. Question number 7. The plant which has reticulate venation is Option A bamboo. Option B sugarcane. Option C rose. Option D lily. The correct answer is option C rose.
Question number 8. The leaves get rid of excess water from the plant through Option A, transpiration. Option B, photosynthesis. Option C, respiration. Option D, pollination. The correct answer is option A, transpiration. Question number 9. Wheat and maize plants have Option A, taproot. Option B, fibrous root. Option C, both of these. Option D, none of these. The correct answer is option B, fibrous root. Question number 10. The ovary contains female sex cells inside. Option A, stigma. Option B, style. Option C, anther. Option D, ovules. The correct answer is option D, ovules. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।